So today for 12th standard, demand and supply diagrams. This class is only about diagrams and schedules. A very important class. You can expect these in your boards for sure. Okay. तो सबसे पहले डिमांड, कंज्यूमर डिमांड करता है, मेंटालिटी क्या होती है? द मेंटालिटी इज प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा. दैट इज, ये इन इजी लैंग्वेज, यदि किसी चीज की कीमत गिरेगी तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे. इफ टमाटो इज 20 रुपीज केजी से 10 रुपीज केजी हो गया, हम ज्यादा डिमांड करेंगे एंड वाइस वर्सा. सो इसका शेड्यूल कैसे दिखेगा? वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड शेड्यूल. कैसे दिखेगा एंड ग्राफ कैसे दिखेगा वो हम देख रहे हैं. सो डिमांड शेड्यूल, एक साइड में क्वांटिटी होगा और एक साइड में जो रेट है वो होगा. सो प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इन रुपीस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, सेकंड में है क्वांटिटी डिमांडेड. से फॉर एग्जाम्पल इन केजीज. सो आपको लिखना है प्राइस जो है रुपीस में है, क्वांटिटी डिमांडेड केजीज में है. नाउ इट इज वेरी सिंपल. से प्राइस ऑफ अ थिंग, मैं बोलती हूँ जस्ट हमको रिवर्स गेम ही तो खेलना है. सो प्राइस यदि मान लो 1, 2, 3, 4 एंड 5 है. प्राइस 1, 2, 3, 4, 5 है. सो क्वांटिटी जस्ट रिवर्स कर दो. दैट इज 1 रुपी यदि किसी का प्राइस है तो क्वांटिटी 5 केजी है. 5 केजी आप डिमांड कर रहे हो. महंगा हुआ यदि 2 रुपीज यदि किसी का प्राइस है, देन जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड फॉल. तो इसका उल्टा टेबल डालो, 5, 4, 3, 2, 1. सो मैंने क्या किया है, जस्ट इनवर्स डाला है. प्राइस 1, 2, 3, 4, 5, क्वांटिटी 5, 4, 3, 2, 1 केजी. एंड अब इसको थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं प्राइस के आगे एक एक जीरो लगा देती हूँ. सो इट इज, इफ प्राइस इज 10 रुपीज पर केजी, आई डिमांड 5 केजीज. लेकिन बढ़ के 20 रुपीज केजी हुआ तो 1 केजी कम कर दिया. फिर 30 रुपीज केजी हुआ तो 1 केजी और कम कर दिया. 40 रुपीज केजी हुआ तो 2 केजीज लिया, और 50 रुपीज केजी हुआ तो 1 केजी ही लिया. सो कैन यू सी विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल हम क्या देख पा रहे हैं? ये कुछ वर्ड्स हमको याद रखने पड़ेंगे. डिमांड शेड्यूल लिखो. डिमांड शेड्यूल is a tabular representation मिस तीर को लो ना अंदर. ओके. Demand schedule is a tabular representation of commodity demanded demand schedule is a tabular representation of commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. So with the demand schedule, सबसे पहले see, जो ग्राफ होता है जो अपन ड्रॉ करते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग बात है. शेड्यूल की मदद से ग्राफ बनता है. सो डिमांड शेड्यूल कैसा है? फर्स्ट कीवर्ड टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन. किस चीज का? कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर. अच्छा, डिमांड तो कर रहे हो बट डिमांड इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू दैट प्राइस एट अ गिवन प्राइस. अंडरलाइन, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ
गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इतना डिमांड जब पूछता है तो उसका शेड्यूल और ग्राफ एक्सप्लेनेशन में होना चाहिए एंड ये शेड्यूल एज इट इज होना चाहिए. ओके, you are always explaining it with the help of schedule, with the help of graph. So this is the first point which you need to write. The second point is रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड का, दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो द रिलेशनशिप बिटवीन price and quantity demanded is always inverse. The relationship between price and quantity demanded is inverse इनवर्स का मतलब क्या है, when price is rising quantity demanded is falling and vice versa. So that can be the further explanation to this. And straight away एक और चीज जो आपको पुट करनी ही करनी है in your answer, demand is equal to, now this is important children, demand equal to, सबसे पहले you should have a desire to purchase. यदि इच्छा ही नहीं है तो खरीदोगे क्यों. So desire plus then you should have willingness to purchase that product. देखो मेरे पास पैसे भी है, डिजायर भी है, पर मेरी इच्छा नहीं है to buy a particular house. Why will I buy it? So effective demand कब होता है, जब मन में डिजायर है plus willingness to purchase and third is plus ability to pay. See, a beggar sitting on a road wants to buy a house. He has desire also, willingness, मन में इच्छा भी है to buy करने की, ability to pay नहीं है, तो वो कभी भी डिमांड नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है. Now look at the other way round. There may be a person, a millionaire, but बोलते ना miser, कंजूस मक्खी चूस है. So उसका desire है, इच्छा तो है मन में कि अरे मेरे को ये घर खरीद लूं तो कितना अच्छा रहेगा. He has money, he has ability to pay also, but उसका willingness नहीं है. ओके, तो भी डिमांड नहीं होगा. तो डिमांड के लिए 3 कंपोनेंट्स बहुत जरूरी है. यू हैव टू पुट दिस इक्वेशन इन योर आंसर. डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे, ये तीनों चीज होती है तब डिमांड बनता है. इसमें से एक चीज भी मिसिंग है तो वो डिमांड नहीं बनेगा. नाउ फोर्थ, डिमांड ग्राफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर टुडे, कि जितने ग्राफ्स और टेबल हम कर सकते हैं हम करेंगे, और इसमें से कुछ ना कुछ कोड पूछता है. ये पास पेपर्स को देख के हमको समझ में आता है. ओके, सो डिमांड ग्राफ बोलो या इवन इफ यू से डिमांड कर्व, सो हम लिखेंगे डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल लिखो, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. Demand curve is a graphical representation demand curve is a graphical representation of what? Of individual demand schedule. ये जो हमने अभी शेड्यूल बनाया है ना, उसको हम कर्व बनाएंगे, उसका हम कर्व बनाएंगे. और डिमांड कर्व होता क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. So let's start with making the graph. Plot x-axis and y-axis in your notebook. Use a scale.
origin, x-axis, y-axis. On x-axis, you will write quantity demanded in kgs. X पे हमेशा quantity demanded and bracket में लिखो in kgs. Okay, proper labeling of x's is important. Y is price in rupees. सिर्फ प्राइस लिख के नहीं छोड़ना, प्राइस इन रुपीस. ओके, नाउ मेरे पास हर साइड में 5 आइटम है. यूजिंग 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 and 5. So price I can see 10 20 30 40 50. So I'll mark down 10 20 30 40 and 50. Price always on your y-axis. Quantity सी स्टार्ट्स ओरिजिन से 1 2 3 4 5 मुझे प्लॉट करना है. तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके 1 2 3 4 5. Okay, you have to label also 1 2 3 4 and 5. Okay, so at price 10, quantity is 5, so I get a point here. 10 price pay, see children, pay attention. 10 price pay over here. 10 price pay, quantity demanded is 5, so I get a point here. 20 price pay, quantity demanded is 4, so either point मिला. 20 पे 4. Now 30 price pay, quantity demanded is 3. 40 price pay, quantity demanded is 2. So यहाँ 2 लिया और ये 40 price पे मैंने 2 डाला. And 50 price pay, quantity demanded is 1. So 50 price pay, quantity demanded is 1. So if I join all these points, मुझे क्या मिलेगा? DD demand curve. So let me join all these points. Please use a scale when you are doing it. So what I get is DD demand curve. Okay, and आपको sloping downward का arrow लगाना है. ये छोटी छोटी चीजें हैं which you have to be very particular while writing your paper. So you will write DD is equal to demand curve, which is downward sloping from left to right. Left से right पे ये नीचे की तरफ गिर रहा है, from left to right. ये लेफ्ट टू राइट गिर रहा है. व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशनशिप between price and quantity demanded. So I have to write down demand curve, which is, children, this is what our examiner is looking for. Where are the correct keywords? So demand curve, which is underlined, which is downward sloping. Demand curve, which is downward sloping from left to right, which indicates, indicating and indicating an inverse relationship
between price and quantity demanded. So this was about the demand schedule. Now we will learn about expansion and contraction of demand. Expansion and contraction of demand under the heading variation in demand. Next, very important topic, variation in demand. न्यू चैप्टर है. No, same chapter hai beta, but again a new graph, a new understanding. So lot of graphs in economics. So एक एक ग्राफ उसका मीनिंग समझेंगे, हाथ से ड्रॉ करेंगे, कुछ नहीं आएगा तो पूछेंगे. So variations in demand, same chapter, new topic. So variation in demand का मतलब क्या होता है? See, demand change हो रही है सिर्फ एक single reason के कारण, that is price. So is the language to be used is when demand for a commodity falls or rises ही यूज करना, इंक्रीज डिक्रीज यूज नहीं करना. I will tell you why. But अभी use the word falls or rises. When demand for a commodity falls or rises due to change in price alone, due to, एक ही reason है, due to change in price alone. When demand for a commodity falls or rises due to change in price alone, other factors remaining constant and other factors remaining constant it is called variation in demand. Which is of two types. वो दो टाइप्स क्या है? Expansion in demand and contraction in demand. So write down इसके two types, expansion in demand and contraction in demand. Expansion in demand and contraction in demand. So वेरिएशन का रीजन एक ही है, प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ है और प्राइस चेंज होने के कारण या तो आप डिमांड बढ़ा के कर रहे हो या घटा के. So I will make a small diagram for it first. You also please make with me. Same x-axis, y-axis. Label x, y, origin. X, Y, origin.
first expansion in demand. Let's assume P price x axis पे, अब now you will write down x axis पे quantity demanded in kgs होता है, y axis पे price होता है. Okay, so x axis पे write down fully quantity demanded in kgs and y axis पे price in rupees. Okay, so let's assume P price पे Q quantity was being given. Okay, we have to start at a certain price, certain quantity. So we are starting at P price पे Q quantity दे रहे थे. Okay, now what happens is price falls word use करेंगे, decrease word use नहीं करेंगे. Price falls from P to P1. अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, यदि प्राइस फॉल होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? Is my question. Yeah, miss. If price falls, what will happen to quantity demanded? Will increase. Okay, आप बोल रहे हैं कि यदि प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, आप यही बात बोलना चाह रहे हैं. सो ये डायग्राम कैसे बनेगा? यदि प्राइस फॉल्स फ्रॉम P टू P1 तो क्वांटिटी तो आप बढ़ा दोगे ना, फ्रॉम Q टू Q1. प्राइस गिरी तो हमने डिमांड को बढ़ा दिया. मिस नहीं समझा. ओके, सो प्राइस P थी, ओरिजिनल प्राइस P थी जिसपे Q क्वांटिटी डिमांडेड. मैं एग्जांपल देती हूँ कि यदि प्राइस 10 रुपीज थी तो आपसे 5 kgs ऑर्डर कर रहे थे, बट प्राइस गिर के 10 की बजाय 6 रुपीज kg हो गई है. तो प्राइस गिरी है तो क्वांटिटी डिमांडेड से आपने 7 kg ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया है. तो प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी. सो डिमांड बढ़ना मतलब एक्स एक्सिस राइट पे जाना. किसी का भी प्राइस गिर रहा है तो वो नीचे जाएगा, तो P से P1 होगा प्राइस गिरेगी तो, एंड क्वांटिटी डिमांडेड जो भी है उससे ज्यादा बढ़ गई बिकॉज प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ा. तो मुझे ये 2 पॉइंट्स मिले. क्या ये अब समझा? हाँ मिस. ओके, सो डिमांड, यदि मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं सो मुझे डिमांड कर्व कैसा मिलेगा? लेट मी ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स. इफ आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स सो मुझे डिमांड कर्व मिल रहा है DD डिमांड कर्व. This is small point A and this is small point B. And नीचे downward sloping arrow तो हमको डालना ही डालना है. So what I find here is demand moves in downward direction on the same demand curve. तो expansion of demand मतलब क्या है? It is a downward movement on the same demand curve. So आप इसको कैसे explain करेंगे? DD is demand curve under expansion of demand. Demand आपको बढ़ते हुए दिख ही रही है. So DD is the demand curve a downward movement on same demand curve. This is important. On same demand curve. नया demand curve नहीं बन गया, उसी demand curve पे. A downward movement on same demand curve from point A to point B. Indicates expansion in demand. A downward movement from point A to point B indicates expansion in demand. So expansion in demand क्या होता है? Reason of expansion in demand is fall in price.
So next point, very important point, write down. Reason for expansion in demand is fall in price. ठीक है, प्राइस गिरी तो डिमांड बढ़ी, दैट इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व. अंडरलाइन डाउनवर्ड मूवमेंट, अंडरलाइन ऑन सेम डिमांड कर्व. नया डिमांड कर्व में नीचे की तरफ गया. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, वी विल अगेन स्टार्ट विथ सेम थिंग. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिनल पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी. नाउ व्हाट विल हैपन फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड? यदि प्राइस बढ़ेगी, दैट इज प्राइस राइज फ्रॉम पी टू P1. ठीक है, प्राइस बढ़ेगी. प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या कम होगी, इज माय क्वेश्चन. प्राइस कम होगी ना, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, तो कम होगी तो मुझे यहाँ अंदर की साइड नया पॉइंट मिलेगा Q से Q1. तो प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड कम. सो आई गेट दीज 2 पॉइंट्स स्टार्टिंग विद द ब्लैक लाइन. नया लाइन रेड वाला है, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई. यदि मैं इसको ज्वाइन करूं तो मुझे DD डिमांड कर्व ऐसे मिलता है, DD डिमांड कर्व. सो अभी कैन यू सी कि इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, सो इफ दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, बट डिमांड कर्व इज सेम. सेम कर्व पे एक्सपेंशन में वो नीचे की तरफ गया, कॉन्ट्रैक्शन में वो ऊपर की तरफ गया, बट द कर्व इज सेम. सो व्हाट विल यू राइट फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? Contraction of demand refers to fall in demand. Contraction of demand refers to fall in demand due to rise in price alone. Due to rise in price alone. प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ एक ही रीजन है डिमांड के चेंज होने का, अकेला प्राइस. बाकी पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल, एडवर्टाइजमेंट, ओके, सीजन, ये सब कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो सब कांस्टेंट है. सिर्फ एक ही रीजन है, प्राइस चेंज हुआ, इसके लिए डिमांड चेंज हुआ. Both in contraction and expansion, the reason of change is only one, which is price. So contraction in demand refers to fall in demand due to rise in price alone. Other factors like, write down, other factors, new point, other factors like tastes, income of consumer, size of population, remain unchanged. अब इसमें अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, सो व्हाट वी विल राइट, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट. कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या बोलेंगे, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट on same demand curve from, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट पे गया, from
point B to point A. That is contraction in demand. If I make one single diagram showing both expansion and contraction in demand, तो वो कैसे होगा? Let's see one single diagram. You also have to make this diagram. One single diagram में expansion contraction, because आप बनाएंगे इससे आपके कई MCQs आप wrong नहीं कर पाओगे, because now you know what it is. आपने रटा नहीं है. X axis, Y axis, X axis पे quantity demanded in kgs, Y axis पे price in rupees. Originally P price पे Q quantity था. Okay, so P price पे Q quantity था originally. If price rise from P to P1, तो क्या होने वाला है? प्राइस बढ़ेगी P से P1 पे, तो क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस बढ़ेगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी. इनवर्स रिलेशनशिप. सो Q से Q1 पे कम आएगी. सो प्लॉट दिस. प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड घटी. सो आई फाइंड दिस पॉइंट हियर. मुझे ये पॉइंट मिला है. ओके, यहाँ पे मुझे ये पॉइंट ऑलरेडी स्टार्टिंग में था. बट व्हाट विल हैपन यदि प्राइस घटती है? इफ प्राइस फॉल्स फ्रॉम P to P2, प्राइस गिरी तो डिमांड को क्या होगा? प्राइस गिरेगी तो हम ज्यादा खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी तो Q2 पे जाएगी. करेक्ट? सो द पॉइंट विच आई गेट हियर इज प्राइस घटी P2 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड Q2 हुई. करेक्ट? सो I get one more point here. If I join all 3 points, I get a demand curve, DD demand curve. So let me join these 3 points. See, you can use a scale and make it ekdam proper. DD demand curve. This is a downward sloping demand curve. Now I am asking a question that there are, ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एंड टोटली इसको क्या बोलेंगे. सो प्राइस इज द ओनली रीजन फॉर चेंज. सो टोटली वी कॉल इट वेरिएशन इन डिमांड. अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोला जाएगा इज माई क्वेश्चन. जब भी प्राइस की बढ़ने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. सो अपवर्ड मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन in demand and downward movement is expansion in demand. How to remember it? देखो A, B, C, D, E. पहले C आता है फिर E. तो पहले C लिखो फिर E. ऊपर C लिखो नीचे E. So upward movement on same demand curve is contraction in demand. And downward movement on same demand curve is expansion in demand. Together, contraction and expansion are called as variation in demand. And only reason